inspire us, who have the pessimism of intellect because they see the current and present danger. Yet somehow they show optimism of the will by finding and directing into a new way. The essential attributes of such a good leader who can inspire has been described by Allama Iqbal. Nigah baland, sukhan dil nawaz, jaan pursoz. Nigah baland, lofty vision, sukhan dil nawaz, heart-touching, inspiring speech. Jaan pursoz, a soul with exquisite sensitivity. That's what you need in a leader, right? Nigah baland, you have to have vision. Sukhan dil nawaz, jaan pursoz. Yahi hai rakhte safar, meer karma ke liye. And this is humanity's universal tragedy, whether it is the East or the West, whether it is the first world or the third world. Such leaders are nowhere to be seen. Instead, in the words of another great Lahori, Habib Jalib, जिनको जहां का दर्द है मादूद चंद हैं, जिनको जहां का दर्द है मादूद चंद हैं, वरना तमाम अपनी तरक्की पसंद हैं. सेल्फ प्रमोशन. जिनको जहां का दर्द है मादूद चंद हैं, वरना तमाम अपनी तरक्की पसंद हैं. अरे दश्ते वफा में साथ वो मेरे क्यों चले, नादा नहीं है दोस्त, बहुत होशमंद है. हमारे इंडियन दोस्त आए हुए थे न्यूयॉर्क. तो जब हमने ये सुनाया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इसके जवाब में एक शेर सुनाया. गैर मुमकिन है कि कश्मीर की गुत्थी सुलझे. गैर मुमकिन है कि कश्मीर की गुत्थी सुलझे. अरे अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है. Now because of all these अहले दानिश जो सोच के उलझा रहे हैं, you know what is the tragedy? कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से. कोई कारवां से टूटा, some broke from the caravan. कोई बदगुमा हरम से. Others began to question their destination. कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाज. Because the leader of the caravan lacks that compassion, that empathy to connect and to inspire. That's why we are all falling apart. A horrible situation. You know, I read this thing the other day. I think it's so beautiful. If you guys don't mind, am I at home? 7 already. I like hearing my own voice. Add me to the crowd. But this is a song that you all must have heard many times in the movie Umrao Jaan. But it kind of summarizes my life also. So beautiful. Justujoo jiski thi usko to na paya humne. What we were seeking we didn't find. Justujoo jiski thi usko to na paya humne. Is bahane se magar dekh li duniya humne. तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमा न हुए. I did not begin to question my goal. जैसे ये कह रहे हैं, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से. Same way we say, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमा न हुए. And I didn't question my own intents and my own struggles. I didn't blame myself that I didn't give it my enough. तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमा न हुए. इश्क की रस्म को इस तरह निभाया. कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, हमें याद नहीं. जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा. ए अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना. उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा. In reality, we can become leaders like Iqbal describes. So what holds us back? Kafi Azmi Sahab describes what holds us back. नशेबे हस्ती से अफसोस हम उभर ना सके.
Alas, we could not rise from the depths that we have sunk to. नशेबे हस्ती से अफसोस हम उभर न सके, फराज़ेदार से पैगाम आए हैं क्या क्या. Despite receiving so many messages from the heights of the gallows. This is my answer to the question Ali Qasmi asked. Is poetry possible in the age of Anthropocene? Yes, not only is it possible, it is precisely what we need to provide the helium for our sagging spirits. And so, the answer involves an ultimate paradox of human existence. We are all stuck in the struggles of life, yet we gain deep insight only through extreme suffering. It is this duality of human experience, the inability to transcend the difficulties of life, and yet the immense lessons that come from enduring such trials, that forms the basis of great poetry. The harder the challenge, the higher the human capacity to rise. The deeper the wounds, the uglier the scars and scabs, the more sublime become the words of the poet. कहीं से लौट के हम लड़खड़ाए हैं क्या क्या, सितारे ज़ेरे कदम रात आए हैं क्या क्या, नशेबे हस्ती से अफसोस हम उभर न सके, फराज़ेदार से पैगाम आए हैं क्या क्या. और जब उसने हार के खंजर जमीन पे फेंक दिया, तमाम जख्मे जिगर मुस्कुराए हैं क्या क्या. और छटा जहां से उस आवाज का घना बादल, वहीं से धूप ने तलवे जलाए हैं क्या क्या. उठा के सर मुझे इतना तो देख लेने दे कि कत्ल गाह में दीवाने आए हैं क्या क्या. और कहीं अंधेरे से मानूस हो न जाए अदब, चिराग तेज हवा ने बुझाए हैं क्या क्या. Has the world ever really seen the great leaders that Ghalib and Iqbal describe? Yes, but too few and far in between. I'll give just one example and show you what such a leader is capable of inspiring others to do. Hur was a general in the army of Yazid. He is the one who more than 1400 long years ago led a contingent of soldiers that encircled Hussein bin Ali and his small caravan, relatives, women, children, outside Kufa and